Is what are the common causes of back pain? Commonly, back pain is supposed to be the degenerative spine. Like as we grow old, the spine starts getting degenerated. स्पाइन घिसने लगती है, सादी भाषा में अगर बोले तो स्पाइन घिसने लगती है और बैक पेन धीरे धीरे पेशेंट्स में जैसे घुटने पेन करते हैं वैसे बैक में भी पेन आने लग जाती है. दैट इज अ नॉर्मल कोर्स विच इज सपोज टू हैपन टू एवरीवन who don't take adequate care of their back. So, but the causes which is causing back pain in younger age group, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा. वन इज विदाउट गाइडेंस आजकल यंगर जनरेशन दूसरे मूवीज़ को देखेंगे या रील्स को देखेंगे तो दे स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइजेज, डंबल उठाए एंड दे स्टार्ट डूइंग जिम एट होम विदाउट एनी ट्रेनर. And कितना वेट उठाना है, they don't understand. Children, they are very, I mean, they are not mature. 14-15-year-old child, a male child has a tendency to do dumbling, and then that dumbbell he will pick up heavy weights. Maybe he is going to gym over there also. वो एक बचपने की कह लो, वो अपने आप को तो बड़ा समझता है बट माइंड इज नॉट मेच्योर. वो जल्दी तगड़ा होना चाहता है एंड ज़्यादा वेट उठाने की कोशिश करता है, अर्ली स्ट्रेंथ गेन करने की कोशिश करता है, मसल्स का अट्रैक्शन होता है कि मैं जल्दी मसल्स बिल्डअप करूँ एंड देन दे लिफ्ट हैवी वेट्स एंड देन दे गेट डिस्क प्रोलैप्स. सो यंगर जनरेशन आइदर बिकॉज ऑफ लॉन्ग प्रोलॉन्ग सिटिंग आवर्स when they are studying for long hours, sitting for long hours on tables, or maybe we've seen children, they are like many a times studying on their beds. They don't sit on table and chair. Poor posture. Poor posture. That is very common. Poor posture is very common in terms of sitting, in terms of watching TV, in terms of using phone also. Yes. Everybody is having this way. So all these definitely, and specifically you mentioned gym. Even in gyms I have seen people are doing gymming in a very, very wrong way. They are just, they do not know when to bend, how to bend, and if they are picking up a lot of weight, they're not following a proper instruction. So random injuries एकदम से जाके, those are very common. And ऐसा होता है कि जब आपको वेट उठाना है, you are supposed to leave your breath and lift. So अगर breath अंदर होल्ड करके आप उठाते हैं तो there is a possibility कि प्रेशर ज़्यादा होगा एब्डोमेन का and there is a chances of disc prolapse. And second thing is like simple thing. If I bend straight like this, the possibility of disc prolapse is less. But if I twist and bend, then the spine is rotated a bit and then you bend and there is a chances of capsular tear which leads to the disc prolapse. So one other thing is that